बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास केमिस्ट्री का यूँ समझें कि तमाम बोर्ड्स के लिए वन डे फार्मूला जो है, पासिंग फार्मूला, वो शेयर करने जा रहा हूँ। तो अच्छी तरह जो है इनको तैयार करना है। बहुत कम जो है वो क्वेश्चन है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले शार्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9 के हाउ इज डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड, डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन विद एग्जांपल, or difference between static equilibrium and dynamic equilibrium. What is meant by equilibrium constant? Give example. What is the law of mass action when and who represented it? What is the relationship between active mass and rate of a reaction? How direction of a reaction can be predicted? Why at equilibrium state reaction does not stop? Why reversible reaction do not go to completion? इसके अगर लॉन्ग क्वेश्चंस की बात की जाए चैप्टर नंबर 9 की, तो राइट डाउन द मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, state law of mass action, drive the expression for equilibrium constant for general reaction, और फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो हैं उनके जो मैक्रोस्कोपिक उनकी प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग, और हाउ इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूज्ड टू प्रोटेक्ट द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। तो इसमें जो पहले 3 क्वेश्चन हैं, बल्कि पहले 4 क्वेश्चन जो हैं लॉन्ग या मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद नेक्स्ट chapter number 10, state the Arrhenius concept of acid and base, define pH, what is the pH of pure water, what are the limitations of Arrhenius concept, Na2SO4 is a neutral salt while NaHSO4 is an acid salt, तो इसको जस्टिफाई करना है। उसके बाद जो है what is Bronsted-Lewis concept of acid and base, what are salts, write some of their characteristics, properties, write some difference between Lewis acid and base with example, what are acidic and base salt, or why H plus and X as Lewis acid, what is an indicator, give example, how soluble and insoluble salts are prepared, write uses of acetic acid, a difference between mixed salt and complex salt, or how conjugate acid and conjugate base are formed। तो इस चैप्टर में लॉन्ग जो आने हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंशाल्लाह। डिफरेंट साल्ट्स, एक्सप्लेन द करेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस ऑफ सम इंपॉर्टेंट साल्ट्स, write down the Arrhenius concept of acid and base, give its limitation, what is Lewis acid and base, explain Lewis theory of acid and base, give 5 uses of base, what is salt, explain 3 methods of preparation of soluble salts, write chemical properties or uses of acids। उसके बाद चैप्टर नंबर 11, व्हाट इज मीन बाय कैटिनेशन, व्हाट इज वाटर फोर्स थ्योरी, डिफाइन मॉलिक्यूलर फार्मूला, गिव एग्जांपल, डिफाइन ओपन चेन या फिर एसाइक्लिक compound, give example, define cyclic and non-balanced compounds, how coil is formed, what is drought formula, what is importance of natural gas। Next, define functional group, also write functional group of alcohol and ketone, what are the heterocyclic compounds, what do you mean by a homocyclic compound, or what is meant by isomerism, give an example, why are benzene and its other homogeneous homologous compounds called aromatic compounds, organic compound are poor conductor of electricity, give reason। लॉन्ग क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से नहीं पूछे जाने। उसके बाद चैप्टर नंबर 12, डिफाइन हाइड्रोकार्बन्स, डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, write uses of ethane and ethene, justify the alkanes, give substitution reaction, why are alkanes called paraffins, how hydrogenation of ghee is carried out, what is meant by hydrogenation of alkenes and alkynes, why are alkanes used as a fuel, और why are the alkenes called olefins, और उसके बाद है why hydrocarbons are soluble in organic solvent state and important use of each, ethene, acetylene or chloroform or carbon tetrachloride, right, oxidation of alkanes KMnO4, define open and closed chain hydrocarbons। तो इस चैप्टर के अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए तो एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ फॉर प्रिपरेशन ऑफ alkanes alkenes, discuss physical properties of alkanes and alkenes, what type of reaction are given by alkanes, explain with reference to halogenizations of alkanes। और उसके बाद राइट यूजेस ऑफ इथेन, इथीन, मीथेन एंड एस्टिलीन, और डिफाइन हाइड्रोकार्बन एंड डिस्क्राइब इट्स टाइप। उसके बाद चैप्टर नंबर 13, राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलीसेकेराइड एंड मोनोसेकेराइड, give the types of vitamin, describe the source and uses of vitamin A, K and D, what is difference between glucose and fructose, write the structural formula, what is the function of DNA, or what do you mean by genetic code of life, how do you justify that RNA works like a messenger,
उसके बाद व्हाट इज जनरल फार्मूला ऑफ अमीनो एसिड, व्हाट आर लिपिड्स, राइट द जनरल फार्मूला, डिफरेंस बिटवीन एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, how plants synthesize carbohydrates, define protein, how are protein formed, or what are carbohydrates, describe the uses of carbohydrates, explain the peptide linkage, name three fatty acids with their formula, और difference between oil and ghee. लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो एक्सप्लेन द सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स, व्हाट इज मीन बाय विटामिन्स, द राइट टाइप्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन्स, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, राइट द यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन आवर डेली लाइफ, व्हाट आर अमीनो एसिड, एक्सप्लेन अमीनो एसिड आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, और कार्बोहाइड्रेट और मोनोसैकेराइड को जो है एक्सप्लेन करना है। टाइम हो तो डीएनए भी लाजमी देख लीजिएगा इस चैप्टर का। उसके बाद चैप्टर नंबर 14, व्हाट इज एटमॉस्फेयर, नेम इट्स कंपोजिशन एंड डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंस बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड एनवायरनमेंट, पॉइंट आउट टू सीरीज इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लेशन, इफ CO2 is not present in atmosphere then can we live alive। उसके बाद है डिफाइन ग्लोबल वार्मिंग रेट टू इफेक्ट, व्हाट threats are there to human health due to SO2 gas as air pollutants, what is greenhouse effect, or CO2 is responsible for heating up atmosphere, how why CO2 is called greenhouse effect, how does acid rain increase the acidity of soil, state the major source of CO and CO2, or how acid rain is formed, give to effects, how the temperature of atmosphere is maintained, define ozone and ozone hole, or how ozone layer being depleted by fluorocarbon, where is the ozone layer found and how is ozone formed, or why CO called the silent killer। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं पूछे जाने। चैप्टर नंबर 15, हाउ वाटर राइजेज इन प्लांट्स, give two properties of water, why are fertilizer and pesticides used, write two disadvantages of detergents, what is fluorosis, what is capillary action, why water molecule is polar, what are the waterborne diseases and what are their cause, difference between soft water and hard water, or describe caloric method of removing temporary hardness, compare industrial and domestic waste, why water is the universal solvent। What do you mean by the boiler scales? How they are removed? How does limestone dissolve in the water? Why are non-polar compound insoluble in water? उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो what is meant by water hardness? How can we permanent hardness and temporary hardness of water be removed? Explain five important waterborne diseases. How can these be prevented? What is meant by hard water? Write its cause. Describe the advantages of disadvantages of hard water. What is water pollution? Describe effects of using polluted water. Or how is a water is a universal solvent, right? For characteristics of a water. उसके बाद चैप्टर नंबर 16, डिफाइन गैंग एंड मेट्रोलॉजी, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्रूड ऑयल एंड द रेजिडुअल ऑयल, what are minerals and ores, what is roasting, how is it done, define fractional distillation, what is the principle of fractional distillation, name the raw material used in solvent process, which raw material are used in the manufacturing of urea, describe the formation of petroleum, name the various meteorological operations, difference between crude oil and residual oil, what is refining of petroleum, how is it carried out, write all the names of four fraction of residual oil, how NaHCO3 is converted to Na2CO3, how slag and matte is removed from the blast furnace। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें इस चैप्टर की तो डिस्क्राइब इन डिटेल द वेरियस प्रोसेस इन्वॉल्व इन द concentration of ore, write a detailed note on ammonia solver process, how crude oil is refined, explain two important fractions of petroleum along with their usage, write a note on fractional distillation of petroleum, how urea is manufactured, explain showing the flow sheet diagram, what is urea, how much nitrogen in urea, explain importance and place of urea। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है लॉन्ग क्वेश्चन है, इनको अच्छी तरह जो है वो आप लोग तैयार करें। मतलब बहुत ही शार्ट गैस पेपर है जो आप लोगों के साथ शेयर किया है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, तमाम बोर्ड के स्टूडेंट्स से फ़ायदा उठा सकते हैं, तो इनको अच्छी तरह करें। कोई बात समझना तो पूछ लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम फॉर रिजल्ट। अल्लाह हाफिज़।